Hello students, I am Himanshi and I welcome you to my YouTube channel again, and today we'll be discussing about exercise 1.1, question number 4 and 5. As we have already discussed question 1 to 3, you can check it into the playlist. So dear children, I have started a series of class 10 and class 9 mathematics for this new session. So we'll be taking every chapter of the NCERT and every exercise of it. So please do not miss any video and please do not miss any update. So please subscribe my channel right now so that you're not missing any update, and you are getting every question and answer solved for NCERT in the channel. So let's get started with the video. So one second. So let's get started. So what you are going to get in my channel, let me remind you. So here you will be getting, all CBSE updates, quick solution to the NCERT class 9 and 10 mathematics. Previous question will be practicing, after completing every chapter, so that you are not missing any important questions, basically for class 10. So our main target is class 9 and mathematics to make your board exam very easy. So please do not forget to subscribe the channel and hit the notification bell, because every day you will be getting a video. The series is being started from today itself. So every day you'll be getting the video on upcoming, exercises and questions. Please do not forget to subscribe and hit the notification bell and like the video. So let's move to the question. So this is question number 4. And question 4 says that use Euclid division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form of 3m or 3m plus 1 or some for some integers m. All right. So how you are going to solve this? So you must have already solved the question number 3 of that Euclid division lemma. So if I talk about the Euclid division lemma or Euclid division algorithm, so both are the same thing. Do not get confused in it. So what does Euclid division lemma suggest? So if I talk about the general equation which you used to write is, you must be remembering A is equals to BQ plus R, okay, for some integer A and B, right? And Q will be the quotient of that particular thing, and R is something called remainder, right? So now, in such a question, the hint is already given in the question on. So this 3m plus 1. So if I write it into this standard form, so I want something like 3q plus R or something, so that I can relate to this particular question. So basically what I'm trying to say is that whenever such question is given, consider the value of B to be 3, right? So what you will say that let A be any integer and B is equals to 3. All right. So from Euclid division lemma, what you can suggest, what you can say? You can say A will be given as 3q plus R, right? Because Euclid division lemma says A is equals to BQ plus R. Correct. Now, what will be the value of R here? R can be greater or equal to 0 or less than 3. Or I can say the value of R could be either 0, 1 or 2. Correct this one? Now, please do not do any mistakes while writing the value of R. Remainder can be always less than the divisor, right? So if you're dividing anything by 3, so remainder will be definitely less than 3, then only will stop the division over there. So that's why the remainder will be less than 3. So remainder हमेशा उस नंबर से कम रहेगा जो नंबर हम कंसीडर कर रहे हैं B के लिए, ठीक है? और ग्रेटर और इक्वल हो सकता है किसके? 0 के लिए. तो पॉसिबल वैल्यूज R की क्या हो जाएंगी? रिमाइंडर की 0 या फिर 1 या फिर 2. अब पुट कर दीजिए इसमें. तो A can be either 3q plus 0 मतलब 3q, or it can be 3q plus 1, or it can be 3q plus 2. तो यहाँ पे 3 कंडीशंस निकल कर आई है A के लिए, और हमें सेटिस्फाई करना है कि ये तीनों का स्क्वायर जो होगा वो कहीं ना कहीं 3m और 3m plus 1 के फॉर्म में ही होना चाहिए. यहाँ पे m कोई भी इंटीजर है, यानी m कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है,
ठीक है. Now, case first if I talk, if A is equals to 3Q, अगर A 3Q है तो 3Q का स्क्वायर क्या होगा? इट विल बी 3Q का होल स्क्वायर. ठीक है, क्या होगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 3Q स्क्वायर, और आई कैन से 2 एट 3, और इस पूरी वैल्यू को हम कंसिडर कर लेते हैं K1. ठीक है, मैं बताऊंगी बाद में हमने ऐसा क्यों किया. जस्ट हैव अ लुक हियर. नाउ केस सेकंड क्या बनेगा हमारा? केस सेकंड ये बनेगा कि अगर A की वैल्यू क्या है? 3Q plus 1 है. So what will the square of A here? 3Q plus 1 का जो स्क्वायर होगा वो कितना हो जाएगा? You know the formula of the identity of A plus B whole square, that is A square plus 2AB plus B square. So it will be A square plus 2 multiplied by 3Q plus 3Q into 1, 2AB that is, and plus 1 square, right? 3Q square कितना हो जाएगा? I am writing as 3 multiplied by 3Q. Why I am doing it? Because I want to take this 3 outside to make 3m form, right? Now it will be 3 मैं ऐसे रहने देती हूँ. यहाँ पे क्या बचेगा? 2 into Q with 2Q, यहाँ पे आएगा 1. इस सभी फैक्टर में से, इस वाले फैक्टर में से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ? 3 कॉमन ले सकती हूँ. So I can write it as 3 bracket 3Q plus 2Q. So it will be 3Q square, right? Right, square and then plus 1. Now इस वैल्यू को मैं क्या लेट कर सकती हूँ? I can let it as 3K2 plus 1. ठीक है, यहाँ पे K2 कोई भी एक ये कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है जो भी हमने सॉल्व करी है. ठीक है, लास्ट केस जो आता है दैट इज केस नंबर 3. केस 3 कब है? जब A की वैल्यू क्या हो जाए? 3Q plus 2 हो जाए. ठीक है, तो व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 3Q plus 2? इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर हो जाएगा वही 9Q स्क्वायर, जिसको मिल सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3Q स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई बाय 3Q मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4. तो मैं क्या लिख सकती हूँ इसको? लिख सकती हूँ 3 ब्रैकेट में 3Q स्क्वायर प्लस 4Q. 4Q क्यों? ये 2 मल्टीप्लाई 2 4 हो जाएगा, और ये Q 4Q आ जाएगा यहाँ पे. और प्लस, क्या मैं इसको 3 plus 1 नहीं लिख सकती हूँ? ठीक, इस 4 की जगह मैं लिख सकती हूँ 3 plus 1. यस, ठीक है. अब इस पूरे में से अगर मैं 3 को कॉमन ले लूं, इतने पूरे एरिया में मैं 3 कॉमन ले लूं, यहाँ पे क्या बचेगा? 1 बचेगा, और ये प्लस 1 आउटसाइड हो जाएगा. तो इसके लिए हमारा आंसर क्या होगा? टू बी 3K3 plus 1. यानी आपने देखा कि ये था हमारा 3K2 plus 1, 3K1, 3K3 plus 1. तो अगर हम K1, K2, K3 सब क्या है? एक इंटीजर्स वैल्यू है जिसको हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे? m से. So at last I can write the statement hence. इसके क्या लिखना है आपको? hence लिखना है, और क्या यहाँ से पूरा एज इट इज कॉपी कर लेना. The square of any positive integer is either of the form of 3m or 3m plus 1 for some integers m. ठीक है, उससे पहले आप ये लिख देना कि where K1, K2, K3 are some integers. ठीक है, and then you can add your note from this particular line that hence the square of any positive integer is either of the form of 3m or 3m plus 1, and that becomes your answer. All right, okay, so I hope it's clear now. So let's move to another question. Use Euclidean lemma to show that the cube of any positive integer is of the form of 9m, 9m plus 1 or 9m plus 8. ठीक है, तब इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे? First of all,
it is 9m, 9m plus 1, 9m plus 8. So 9 हमें किसके स्क्वायर है, किसके क्यूब से मिल सकता है? स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा? उसका 3 होगा। यानी यहाँ पर भी हमें क्या लेना है? वही लेना है कि लेट a be an integer and b is equals to 3. सब समझ चुके होगे कि क्या आएगा अगली लाइन में? तो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा a क्या हो जाएगा? हो जाएगा 3q plus rk, where r will be equals to 0, 1 or 2. Correct? All right. So now, what will the value of a? A can be 3q or 3q plus 1 or 3q plus 2. यहाँ पे भी आपको हर एक केस को बड़े ही केयरफुली सॉल्व करना है, बिकॉज नाउ इट इज टर्न फॉर द क्यूब. ओके, तो आपको क्यूब का फॉर्मूला लगाना होगा. So case first, if a is equals to 3q, so what is the cube of 3q? तो a क्यूब क्या हो जाएगा? 3q का होल क्यूब. 3 का क्यूब कितना होता है? 27. q क्यूब. Now what you have to take common here? 9. Okay, 9 common ले लोगे तो क्या बचेगा? It will be 9 3 27. It will be 3q क्यूब. और मैं इसको क्या कंसिडर कर लेती हूँ? m, where m is an integer. इतना क्लियर हो गया? तो पहला केस हमने क्या किया? पहली वैल्यू हमने a की चूज करी और उसे क्यूब कर दिया, और क्यूब करने के बाद हमने 9 को बाहर ले लिया, बाकी जो भी अंदर ब्रैकेट में बचेगा उस सबको हम m लेट कर लेंगे. सिंपल. ठीक है. नाउ लेट्स मूव टू द केस नंबर 2. So second case can be if a is equals to 3m plus 1. So 3m plus 1 अगर होगा तो क्या करना है हमें? Just a second, it will be 3q plus 1. m तो हमें कंसिडर करना है ना, सब m को कंसिडर नहीं कर सकते अभी, क्योंकि m हम बाद में लिखेंगे. ठीक है. So now what is the square of this? a cube will be equals to 3q plus 1 का whole cube. And you know the identity of a plus b whole cube, it is a cube plus a square b, 3a square b plus 3ab square and plus b cube, right? So let's put the value. It will be 3q cube plus 3 into 3q square multiplied by 1 plus 3q multiplied by 1 square and plus 1 का cube. Correct? Now, what we'll get from here? 27q cube. From here, 3 with a 9, 3 27 q square, and this will be 9q, and this will be 1. So 9 हम किसमें से कॉमन ले सकते हैं? डेफिनेटली इन टर्म में हम 9 कॉमन ले सकते हैं. So if I take 9 as a common, what do I get? 9 3 27, 3q cube, 3q square plus q and plus 1. तो इसको हम क्या लेट कर लेंगे? अगेन m लेट कर लेंगे. तो ये बन जाएगा 9m plus 1 फॉर्म. ठीक है. यहाँ पे m क्या होगा? Where m be any integer, right? So now let's move to the case number 3. तो मैं ये बोर्ड क्लीन करूंगी ताकि हम केस 3 को भी रिकॉल कर सके. So what will the case 3? If value of a is equals to 3q plus 2. So what is the square of what is the cube of it? So a cube कितना हो जाएगा? 3q plus 2 का whole cube. That will be equals to 3q cube. 3 into 3q square multiplied by 2. 3 multiplied by 3q multiplied by 2 square and 2 cube. This will be equals to 27q cube. This will be 27 into 2. So I will write this 27 into 2q square. Why I'm writing? Because taking 9 common in from 27 will be very nice to, like very easy to take the common from here. It will be 3 3 is 9, 9, and this will be 4q and 8.
Now I can take 9 as a common from all these terms, right? This is 9. Here I will be getting, 3Q cube. This will be 3 into 2, that will be 6Q squared. And this will be 4Q plus 8. I can replace this again by M, where M is any integer. So you visualize that the 3Ks obtained was 9M, 9M plus 1, and 9M plus 8. It means we prove that the cube of any positive integer is of the form of 9M, 9M plus 1, 9M plus 8. So after writing hence, you can just copy out this statement as it is, okay? And that will be your answer. All right. So this was all about the today exercise, and we have completed our exercise number 1. Okay. So exercise 1.1 is completed now. So tomorrow we will learn about exercise 1.2 and fundamental theorem. So please do not forget to subscribe the channel for getting more updates. We'll be regular solving these questions and we'll be helping out to solve your school homework as well. Okay. So thanks for watching and do not forget to subscribe the channel. Okay. And hit the like button if you like. Thank you.